Hi guys, welcome to OPSC Wallah. Am I audible guys? मो आवाज क्लियरली सुबुची केमिति अच्छा मो ललित सर समस्त को स्वागत करुची ओपीएससी वाला प्लेटफॉर्म को फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म को केमिति मो आवाज समस्त को क्लियरली सुबुची समस्त गोटे कमेंट दियो चैट बॉक्स रे गोटे वीडियो को लाइक करो सांग साथी सहित शेयर करो आज आज आम डिटेल से स्क्रप्चर जो आपण माने टॉपिक देखिए स्क्रप्चर आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया आर्ट एंड कल्चर बहुत डिफिकल्ट लगे समस्त को कहीं आर्ट एंड कल्चर रे से भाया सफिशिएंट मटेरियल न थाए इम्पोर्टेंट इश्यूज को कवर करा नहीं था मु आज गोटे सिस्टमेटिक वे रे केमिति स्टार्टिंग रु आपण माने पढ़ी पारिबे सेटा जानिबे कि स्क्रप्चर कौन 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 स्ट्रक्चर स्क्रप्चर अच्छी आम काली सेमती देखी टेम्पल आर्किटेक्चर एवरीवन मो आवाज क्लियरली सुबह समस्त को मो चाट बॉक्स वेट करथली कि तुम चाट बॉक्स मु देखिबी कौन कौन कहूच ओके नमस्कार नमस्कारम जय जगन्नाथ चैनल बहुत बढ़िया ये आपण ओपीएससी वाला रे जेकोसी कोर्स रे वन डे एग्जाम हो सिविल सर्विस एग्जाम हो ये सब एग्जाम रे आपण माने फुल फ्लेज रे प्रिपरेशन करि परिबे कंप्रिहेंसिव प्रिपरेशन करि परिबे आपण माने पढ़ार हाई क्वालिटी पढ़ा पाई परिबे हाँ लाइव क्लासेस होची एप्लिकेशन लाइव क्लास होची एटा यूट्यूब रे क्लासेस होची आपण यूट्यूब रे फ्री क्लासेस रहउची एवं एप्लिकेशन रे ये प्राइस देले जो जो कोर्स आपण चाहउचंती सेही अनुसार आपण को मिल जिवो जोंडी एक्रोस बेस केवल प्रीलिम्स पई यूनिट इंटीग्रेटिव बेट केवल ओसीएस पई ये सब पाई जिवे आपण जेतेबे भी जो कोनसी आउ आपण माने देखुथिबे कि प्राइस रेंज जो रखा है वेरी अफोर्डेबल माने एवरीवन कैन बी एबल टू अफोर्ड ओके तो जी जो कौन सिविल सर्विस जा प्रिपेयर करुच या ये तो ये क्लासेस आम सिविल सर्विस इंडियन स्क्रप्चर या आम डिटेल्स देखा मु बिंदास अच्छी विदुस्मिता केमती अच्छ तुम केमती कौन पढ़ापढ़ी चलती ना कौन करुच ये जार जहाँ भी किसी प्रॉब्लम्स था पढ़ा रिलेटेड हो कि एग्जाम रिलेटेड हो कौन सिविल सर्विस प्रिपेयर करुच कि आउ कौन प्रिपेयर करुच लेट मी नो आम डिस्कसन करें चार्ट माध्यम मोर काम है तुमको राइट डायरेक्शन राइट पाथ रे केमती आम आगो को नहीं जीवु
तो जदि आपण माने प्रिपरेशन से भाया करूचंती किबा कोनोसी वन डे एग्जाम हो या ओवरऑल प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे प्रिपरेशन करूचंती आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। तो आमे लास्ट क्लास देखी टेम्पल आर्किटेक्चर जदि कहीं देखी न क्लास क्लास जदि स्किप कर जाइछ ताले देखी दबो समस्ते टेम्पल आर्किटेक्चर या पूर्व क्लासिकल डांस देखी टेम्पल आर्किटेक्चर आमे देखी नागरा स्टाइल भी तीन टा सब कैटेगरी देखी गोटेला ओडिशा स्टाइल या कलिंगा स्टाइल सोलांकी सोलांकी स्टाइल आ गोटेला चांडेला चांडेला या खजुराहो स्टाइल सिमिलरली नागरा स्टाइल द्राविडियन रो ए दुटा मेन टाइप्स द्राविडियन स्टाइल देखी आमे देखी वेसरा स्टाइल्स पाला पल्लवा स्टाइल्स से पल्लव रही तीन टा टाइप रो अछंती ये सब आमे काली डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन तो विदुस्मिता देन आज आमे देखिबा स्ट्रक्चर आज आमे देखिबा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर आमे आमे देखिबा कि व्हाट इज स्ट्रक्चर डेफिनेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ culture then major school of architecture three important school of architecture three major जोटा कि क्वेश्चंस भी आसे मेजर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर मेजर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर कौन कौन कहि परियो किए एनीवन आर आइडिया अछि किए कहि परियो ओके जॉइन करिचो देखो सबू क्लासेस रो जो क्लासेस हो जाइए कौन बैच रे जॉइन करछन सेटा गोटे भी कथा आपण सर्व सक्षम 2.0 या सर्व सक्षम 3.0 कौनटा को जॉइन करछन सेटा गोटे कथा जदि सर्व सक्षम 2.0 रे करथिबे आपनकर जहा जहा सब्जेक्ट कवर हेइथिबो ता विषय तार रेकॉर्डिंग पाई जिवे एवं आगु को तार लाइव क्लासेस पाई जिवे नोटिफिकेशन आज जाइनी माने आज क्लासेस आपनकर नथिबो सर्व सक्षम 3.0 रो क्लासेस आगु को अछि आपण पाने करि परिबे प्रणाम प्रणाम सर्व सक्षम 360 ताले पाई जो सब पाई जो बिल्कुल ऑलरेडी बनी प्रणाम
प्रथमेश यू विल गेट एवरीथिंग से किसी डाउट नहीं जदि जदि प्रॉब्लम्स अच्छी तुम कांटेक्ट सेंटर को जाओ कांटेक्ट सेंटर जाइए आप कांटेक्ट करूँ इफ एनी डाउट यू हैव तो माने डाउट क्लियरिंग सेशन आमर माने तुम ग्रीवेंसेस मेकानिज्म बहुत बढ़िया अच्छी आपण मैंने आराम से सॉल्व करेंगे थ्री मेजर स्कूल ऑफ स्ट्रक्चर थ्री मेजर स्कूल ऑफ स्ट्रक्चर गोटे है गांधारा आ गोटे है मथुरा आ गोटे है अमरावती आ गोटे पर डेभलप होता सारनाथ गुप्ता समय सारनाथ स्कूल ये तीन जो डेभलप होता दिस थ्री ड्यूरिंग पोस्ट मौर्यन फेज ड्यूरिंग पोस्ट मौर्यन फेज ओके तो आम आज देखा इंडियन स्क्रप्चर स्क्रप्चर माने कौन व्हाट यू मीन बाय स्क्रप्चर एनीवन कार किसी आइडिया अच्छे आपण मैंने शुणी थे देखो आर्ट एंड आर्किटेक्चर सबुठ बोरिंग लगे सब डिफिकल्ट लगे आपण मैंने टिके इंटरेस्ट देकी पढ़े गोटे इनफॉरमेशन पाइबे नॉलेज गैदर हो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इज द टाइप ऑफ एग्जामिनेशन यू हैव टू रीड एवरीथिंग अंडर द स्काई खास करके अकॉर्डिंग टू द syllabus and syllabus some syllabus is very interesting and some part of syllabus is a little bit boring but you have to study all जिते मैक्सिमाइज कर तुम पढ़ी पढ़ा को सेते बेटर रिजल्ट पाइबो से सिलेक्शन चांसेस में स्कीपिंग एटीट्यूड रखिबो सर आर्ट एंड कल्चर प्रीवियस रेकर्ड क्लास किसी ना ताले तुम आगु को हबो मोर आर्ट एंड कल्चर नथिबो जदि आगे आर्ट एंड कल्चर नाही यू विल गेट आर्ट एंड कल्चर लाइव क्लासेस हो आई विल टेक केयर ऑफ दैट आई विल टेक योर आर्ट एंड क्लास कल्चर क्लास माने सर्वसक्षम बैच रे आर्ट एंड कल्चर हेनी ये पुराना बैच रे जहार हेची तार तांको रिड हबार नहीं तुम्हें यू विल गेट एवरीथिंग जो जेबे जॉइन कर आई होप तुम जब जॉइन कर मॉडर्न हिस्ट्री चलती बोधे जब मॉडर्न हिस्ट्री चलती ताले तुम्हें आर्ट एंड कल्चर तुम है न यस प्रथिमेश राइट राइट art of making figure or object from stone wood clay that's right sculpture जदि गोटे गोटे आर्ट कि स्टोन रो हो किंबा तुम क्ले रु हो तुम वुड रो हो आमे जदि मेकिंग करवा the tradition of Indian sculpture extended from the Indus Valley civilization of 2500 BC to 1800 BC during which small terracotta figurine were produced आपण माने कदर किए कहि परिबो व्हाट यू मीन बाय टेराकोटा टेराकोटा माने कोन गोटे सेकंड पिला माने
Okay. So great circular stone pillar, carved lion, ये सब Mauryan period रे, these are all part of sculpture. Then बहुत सारा हमें 9th and 10th century sculpture जेनिथ तार reach करथिला in the form of six stage जेमते कि हमें sculpture of तांडव dance है ना, bronze तांडव नृत्य देखिथिले ये figure गुडा. So feature of Indian sculpture. Indus Valley sculpture basically similar धीरे धीरे normally terracotta माने बुझी पारछ what do you mean by terracotta? Okay, we'll do Odisha sculpture. तो जा जा दरकार तुम कह, will definitely. Yes, basically sculpture ओडिशा रे जो जो स्कल्पचर अछि ता विषय आमे गोटे अलगा वीडियो नहीं परिबा, सेतर किछि डाउट नाही. इंडस वैली सिविलाइजेशन मोस्टली जो देखिबो टेराकोटा स्कल्पचर पाइबो. देन वैदिक एज रे सेही वाला किछि डेवलपमेंट नाही. मौर्यन समय रे बेसिकली बहुत सारा मोनुमेंट्स वगैरह देखिबो. पोस्ट मौर्यन समय रे डिफरेंट स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप. देन गुप्ता स्कल्पचर ये सब आमे वन बाय वन सीक्वेंसली देखिबा. देन आमे डिटेल्स देखिबा कल पीरियड रे मध्य. तो गोटे क्वेश्चंस जे ओसीएस ପାଇଁ प्रिपेयर करथबो ओडिशा सिविल सर्विस ପାଇଁ तो सब क्लास रे गोटे क्वेश्चंस दिए. ए क्वेश्चंस ला द चोला ब्रोंज स्कल्पचर, the Chola bronze sculpture are considered Chola bronze sculpture as considered as the most elegant, considered as the most elegant, substantial. रेट लेखि पारिबो. The Indian sculpture had mastered the bronze medium and the casting process as much as they had mastered the terracotta sculpture and carving. The bronze sculpture are characterized by the exquisite beauty and aesthetic appeal. The dancing girl, the dancing girl from Mohenjo-daro is one of the earliest simplified figures. Then bronze sculpture. Bronze basically Indus Valley civilization को bronze age civilization कहा जाए. ब्रोंज प्रथम थर पर से माने यूज करिया सिखि. ता पूर्व कपर थिला. कपर थिला कोठी इंडिया रे छेत्री माइंस कोठी सेटा राजस्थान रे झुणझुण डिस्ट्रिक्ट. देन कपर आउ टीन से माने आनिले अफगानिस्तान नो. कपर टीन मिसेले मिसे की बनेले कोन ब्रोंज. ओके ओके ठीक अछि. प्रतिमेश वर्षा होउची नाही सबडे वर्षा होउची.
So making a bronze sculpture is a high stage of development in South India during the medieval. Although bronze images were modeled and cast during the Pallava period in the 8th and 9th century, some of the most elegant and exquisite statues were produced during the Chola period. The 9th century Kalyana Sundara Murti is the highly find out karibo ki kaunti achi eta. So तुमे बॉडी पार्ट मु देखे दउची तुमे चाहिले लेखि पारियो कि केमिति चोलार ता विषय जानिले तुमको भलसे द्राविडियन स्क्रप्चर इंपैक्ट अछि यू विल एबल टू राइट समस्त गोटे लाइक करिचन नाही समस्त गोटे लाइक करो जरूर समस्त गोटे लाइक करो लाइक कले पैसा पड़ेनी इंडस वैली सिविलाइजेशन देखिले जोंथरे बहुत सारा Harappan sculpture had 3-dimensional volumes. The form of excavation include seal militila, pottery militila, gold jewelry, terracotta paper and other wood work. Metal sculpture in Indus Valley civilizations. Harappan artisans are dexterous in the sphere of bronze casting. They employed the lost wax process while sculpting the figurine. The lost wax process, also called Tire Purdue, is a method of metal casting in which molten metal poured into a mold that has been created by means of wax model. Once the mold is made, the wax model is melted and drained away. A hollow core can be affected by the introduction of heat-proof core that prevent the molten metal from the totally filling the mold. So basically तुम्हें lost wax process जदि देखी दबो तुम्हें Google ए देखी दबो lost wax process basically wax टाकू बाहरी जीवो ताकू जळे देले wax बाहरी जीवो देन मॉडल टा रेडी हेगी रही गला ये मेथड रे करूथांती इंडस वैली सिविलाइजेशन रे ब्रोंज डांसिंग गर्ल स्टैचू जानिचो ब्रोंज डांसिंग गर्ल स्टैचू जोंटा कि मोहेंजोदारो रे मिलितला ये तार स्ट्रक्चर एंड ब्रोंज बुल एंड कालीबागान मिलितला discovered Mohenjo-daro and is perhaps the greatest surviving achievement of metal works of Harappan. ब्रोंज रे पूरा बनैथिले एवं ब्रोंज सही समय प्रथम थर पई हरप्पन पीपल मते कहले समस्ते हरप्पन सिविलाइजेशन आमे कहूछु आउ सही नाम को इंडस वैली सिंधु नदी सभ्यता भी कहूछु इंडस वैली सिविलाइजेशन और गोटे क्वेश्चन सेला आपण माननकू कि कोनटा ठीक अछि इंडस वैली सिविलाइजेशन और हरप्पन सिविलाइजेशन कैन एनीबॉडी को केही कहि परिबो जदि रिजन सह ठीक से कहीदेव तुमको मु 1000 टंका देवी anyone I want you to answer कि हरप्पन सिविलाइजेशन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन दीटा को माने कोनटा मोर करेक्ट आमे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहूछु सेटा ठीक ना हरप्पन सिविलाइजेशन मु कहूची सेटा ठीक particularly Harappan age which one is correct world famous figure shows a female dancing figure standing as if relaxing after dance the right hand on her hip and the left dangling free she wore a large number of bangles she wore a large number of bangles probably made of wood or ivory on her left arm together with a couple of pairs her right arm आमे देखीजे फिगर तो देखीजे समस्ते केही गोटे जणे कहि पालनी आश्चर्य कथा मैं पाठ पढुचटी अरे भाई पाठ माने प्रिपरेशन करूछ ना कोन करूछ हरप्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन मु दीटा डिफरेंस पली
हारप्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन सेटा कहि होबनी या दीटा को ठीक अछि ना हारप्पन सिविलाइजेशन ठीक अछि ना इंडस वैली सिविलाइजेशन ठीक the bronze figure of the horned bull bronze figure of horned bull and the buffalo are the other metal sculpture made during this ये ହେଲା हरप्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली स्टोन स्कल्पचर और इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टोन रे देखिबो ये सब स्टोन रे स्कल्पचर प्रीस्ट किंग फ्रॉम मोहेंजोदारो रो एटा मिलिथिला beard man and a human torso ये beard man terracotta ये torso terracotta sculpture of Indus Valley civilization art are practiced by the people of Indus the figure of mother goddess এটা mother goddess figure crafted in terracotta discovered in Mohenjo-daro one of the significant terracotta sculpture of this consists of beautiful embellishment of the body and a punched nose and reveals the concept of the mother goddesses as a sign of prosperity and fertility. Beard and ornaments. Harappan men and women decorated themselves with a large variety of ornaments produced from every conceivable metal. Bead industry seems to have been well developed as evident from the factory discovered over Chanudaro, Lothal. बीड में माने कौन कौन ताबीज वगैरह ये बनाउथिले ताबीज वगैरह बनाउथिले ये सब मिलुथिला तुमर हरप्पन पीपल मेटल लाइक कॉपर ब्रोंज गोल्ड ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଶିଖିଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ କପର ବ୍ରୋଞ୍ଜ this cylindrical and spherical barrel shaped and segmented beads ସେଠି ଏମାନେ बनाउथिले ये सब देख bead making Mauryan Empire very important आमे या आगु को देखियो Mauryan sculpture then post Mauryan sculpture so most of the Mauryan sculpture related to Buddhism most of the Mauryan sculpture are related to Buddhism Mauryan sculpture introduced new thing in Indian sculpture like introduction of stone and bricks wooden sculpture या पूर्व थिला अशोका केवल अशोका जो बुद्धिजीम स्प्रेड हवर अशोका बहुत बड़ रोल प्ले कर अशोका एडिक्ट्स अशोका जो एडिक्ट रॉक एडिक्ट खास करके ये पिलर हो या रॉक एडिक्ट हो ये मेड अप ऑफ शाफ्ट ऑफ सैंडस्टोन रही रिप्रेजेंट द अर्लीस्ट नोन स्टोन स्कल्पचर इन आवर कंट्री
Foreign influence and Mauryan sculpture. कौन influence foreign ro? An adaptation of Archimedes' model has been recognized the edicts of Asuka, but the Mauryan pillar are different from the Archimedes pillar. The Mauryan pillars are rock-cut pillars, whereas the Archimedes pillars are constructed in pieces by the masons. The stupa sculpture of Mauryan Empire. स्तूपा स्तूपा माने जानिଛ ତ ନାଇଁ स्तूपा କାହାର କିଏ ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲା स्तूपा एनीवन ଓ ବିଲ୍ଡ स्तूपा बेसिकली सांची स्तूपा हो मध्य प्रदेश सराउंडेड बाय executive carved and these are basically dome like structure. I'll show you built with bricks and stone, and they are initially created as a symbols of artistic tradition in Mauryan dynasty. It is also famous and notable due to the four gateway called Toranas. Torana Dwaras, ये एटा ला तोरण एवढ्या चारिटा गेटवे एटा ला सर्कम्बुलेटरी पाथ एटा ला स्तूपा अंडा shape ର have you seen any stupa Sanchi stupa have you gone there in Dholi pillar sculpture of Maurya difference कौन pillar आउ rock pillar sculpture आउ rock ଭିତର rock sculpture with the difference pillar basically normally ଅଶୋକା ଘର କରିବା ପାଇଁ ବିଲ୍ଡିଂ ରେ ୟୁଜ୍ କରା ହଉଥାଏ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ एज स्प्रेड करिया नॉलेज ऑफ धम्मा नॉलेज ऑफ स्टेट रो स्प्रेड करिया ପାଇଁ ये यूज कर सारनाथ पिलर द फेमस लायन कैपिटल पिलर जोटा कि अशोका इरान रे करते सारनाथ पिलर भी आपको कहा जाए या लायन कैपिटल artistic achievement of the Indian artist and patronage of their masters. Two kinds of stone had been employed in the creation of pillars. Consist of fine grained hard sandstone of Chuna region close to the Varanasi, as well as spotted white red sandstone belong to the मथुरा जानिଛ कोठी मथुरा Vrindavan. The inscription containing principle of Dhamma or righteousness are embedded in all these pillars. Lauria Nandangarh रे lion capital at Lauria Nandangarh and bull capital at Rampurba are भी मध्य बहुत important sculpture. सारनाथ capital केवल capital है Rampurba bull चला bell shape this is abacus and या ऊपर छिटाई bull एठी चला abacus ornamented अछि से normal अछि एठी फ्लाउटेड पेटाल्स ହେଇକି ଅଛି ସେଠି ଏତେ ଭଲ ସେ ନାହିଁ ଚାରିଟା
मते कहला एथरा जो अछि एनिमल लायन ना टाइगर के को आउ जने पछुको अछि आउ गोटे पछुको अछि देखा जन तुमको ता लायन ना टाइगर क्लियर गाइस समझते ना कार की डाउट अछि figurine sculpture of Mauryan Empire figurine sculpture of Mauryan Empire the whisk bearer of Didarganj the whisk bearer of Didarganj female yaxi figure in of Besnagar and the male statue at Parkham are some of the famous figurine sculpture of the Mauryan Empire. Numerous terracotta idols were also sculptured by artisans and clay idols of the mother goddesses have been discovered by some of the excavation conducted at Ahichatra. Mother goddess देखिଛ ये Mauryan Empire Yakshi of Besnagar and male statue at Parkham. ये जगह पाइबो ଯେମିତି ସ୍କ୍ଲପଚର କିଛି ପାଇବ ଧଉଳି ଆମର ଏଇଠି ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଦେଖିଛ ନାହିଁ ଧଉଳି ଭିତରକୁ ପଶିଲା ଉପରକୁ ଚଢିଲା ବେଳକୁ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଥାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଇଟା ଧଉଳି ଆମେ ପଢୁଛେ ତୁମେ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛ ଏଠି ଯିଏ ରହୁଛି ବି ସିଏ ପାଖରେ ଯାଉନି ଆଉ ଯଦି ବି ଯାଇଛ यार सिग्निफिकेंस जान पार नथियो जदि भी किए एठी जाइथिबो यार सिग्निफिकेंस बिल्कुल जानि पार नथियो राइट और रॉन्ग विल नॉट पोस्ट मौर्यन वेरी इंपोर्टेंट पोस्ट मौर्यन समय गोटे सेकंड
तो तीनटा स्कूल गोटे है गांधारा स्कूल, मथुरा स्कूल, देन विल सी अमरावती स्कूल। गांधारा स्कूल, मथुरा स्कूल एंड अमरावती स्कूल। द स्ट्रक्चर ऑफ द गांधार, दिस आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तीनटा स्कूल देखी दियो, मो काम रे आसी जीवो एग्जाम रे। तो Gandhara region extending from Punjab to border of the Afghanistan was an important center of Mahayana Buddhism up to 5th century. Owing to its location, the Gandhara school imbibed all kind of foreign influences like Persian, Greek, Roman, Saka and Kushan. The Gandhara school of sculpture is known as Greco-Buddhist school of art. Greco-Buddhist, since Greek techniques of art are applied to the Buddhist subject. तो जेहेतु गांधारा रीजन तुम्हें जानिଛ कोठी, गांधारा बेसिकली तुमरो प्रेजेंट अफगानिस्तान, सम पार्ट ऑफ तुमरो पीओके रीजन, ये सब मिसेगी। तो से एरिया रे मेनली फॉरेन इन्फ्लुएंस थिला, पर्शियन, ग्रीक, रोमान, साका, कुसान ये सब जगह रूल करते, सेथिबे तांकर इन्फ्लुएंस देखा को। मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशन कोन ना, इवोल्यूशन ऑफ ब्यूटीफुल इमेज ऑफ बुद्धा, इवोल्यूशन ऑफ ब्यूटीफुल इमेज ऑफ बुद्धा को बहुत बढ़िया स्ट्रेट बुद्धा साय छाती बाहर करिकी चेस्ट बाहर करिकी ये सब एंड बुद्धिसत्व ये एइथरे तार स्पेशलिटी। एटा को ग्रीको रोमान पेंथियन भी कहती, इंडो ग्रीक्स आर्किटेक्चर भी माने माने स्कल्पचर भी कहती, इंडो ग्रीक स्कूल। तो गांधारा रीजन एक्सटेंड पंजाब इनटू द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान एंड ऑलमोस्ट एठू बेसिकली तार डेवलपमेंट। लेट्स सी द पिक्चर, देखो केते ब्यूटीफुल बुद्धांकर पिक्चर, भलो नहीं? Important characteristic of Gandhara school. The depiction of Lord Buddha in standing or seated position. एटी देखले seated position, किसी किसी जगह standing position, देखो standing position. The seated Buddha is always shown cross-legged in traditional Indian way. Rich carvings, elaborated ornamentation, and complex of grey stone and mainly Buddhist imaginary it used. The best specimen of Gandhara art are from Julian and Dharmarajika Stupa at Taxila from Hadda near Jalalabad, modern Afghanistan. Gandhara art जदि बेस्ट कोंडी पाइबो तक्षशिला पाखरे and Hadda near Jalalabad, modern Afghanistan. Tallest rock cut statue of Lord Buddha is located in Bamiyan, modern Afghanistan. ग्रे स्टोन यूज करुले मेनली बुद्धा इमेजिनरी इमेज, देखो सबथिंग एवरीथिंग इज अराउंड बुद्धा, रिच कार्विंग, एलाबोरेट ऑर्नामेंटेशन, कॉम्प्लेक्स सिंबल. Gandhara sculpture so strong Greek influence, Greek रो influence कने अफगानिस्तान वगैरह तुम देखिबो the depiction of man god and the wavy hair, sandals, extensive drapery. मैं भावियोनी कि सर सेतल तो मुस्लिम थिबे ए एरिया रा, सेमति कि भाबुछ कि अरे भाई मुस्लिम से एरिया कुआडू आसीबे, मुस्लिम कुआडू आसीबे से एरिया रे मुस्लिम रो जन्म हैला अरब रे 620 पाखापाखि, एतरे मोहम्मद रो डेथ हैला तापर सेटा स्प्रेड हैला 620 सी, एटा बीसी
मेन गॉड, वेवी हेयर, सैंडल्स, एक्सटेंसिव पेपरी। तो स्तूप को प्लास्टर यूज करा होता है। ग्रीक आर्ट रे एटा देखा होता है प्लास्टर बहुत प्लेन हुए वाइडली यूज इन गांधारा आर्ट वर्क। However, Gandharan sculpture owes to Roman art too. Some of the feature of classical Roman art observed in Gandhara sculpture. Vine scroll, cherubs with garlands, tons, and centaur. The draping of robes on Buddha, the drapings of robes on Buddha was also taken from Roman sculpture. Sculpture of Mathura. ये थिला गांधारा। गांधारा काउंटी नॉर्थ वेस्ट, बेसिकली नॉर्थ, मेनली नॉर्थ पाइब नॉर्थ इंडिया रे। Mathura School of Art flourished at the city of Mathura between 123 Common Era, promoted by Kusa. They established the tradition of transforming Buddhist people into human form. The important characteristics of Mathura School now are depicted as a strongly built right hand raised in protection. एमती protection ପାଇଁ strongly built କରାଯାଇଛି ମଥୁରା। figure produced mustache वगैरह देखिए beard mustache दाढ़ी फाड़ी थिबो figure पाइबो। सॉरी mustache ये नथिबो, do not have mustache and beard as the in Gandhara art रे पाइबो। and एठी spotted red sandstone यूज, एठी ग्रे sandstone सेठी यूज करथला, एठी red sandstone यूज कर। It not only produced beautiful images of the Buddha but also of the Jain Tirthankara and gods and goddesses of the Hindu pantheon. So एठी बुद्धा थिले as well as जो बुद्धिस्ट, जैनिस्ट एंड हिंदू तीन जनकर एठी होतला। बट तुमे मथुरा रे सॉरी गांधार रे केवल बुद्धिस्ट एठी फॉरेन इन्फ्लुएंस थिला, एठी भी फॉरेन इन्फ्लुएंस। and Buddha is shown to be surrounded by two bodhisattvas, that is Padampani holding a lotus and Vajrapani holding a thunderbolt. थंडरबोल्ट माने जानछु तो हाँ। अमरावती सातवाहन पीरियड रे ये डेवलप होइतला एवं जानिछ ना नहीं काहे कि आंध्र प्रदेश रो कैपिटल अमरावती करागला। द हिस्ट्री बिहाइंड दिस। Amaravati is situated on the banks of Krishna River. It is the site for the largest Buddhist stupa of South India.
This school of art had a great influence. School of art had a great influence on art in Lanka and Southeast Asia, as products from here were carried to those countries. এটা indigenous, এটা ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଇଟା କାହାର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ନାହିଁ। ଅମରାବତୀ ଯେଉଁଟା କି ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ କେବଳ ଆଣ୍ଡ କେବଳ ଇଣ୍ଡିଆର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଉପରେ ହେଇଛି। ବଟ୍ ମଥୁରା ଆଣ୍ଡ ଗାନ୍ଧାରା, ଗାନ୍ଧାରା ପିଓରଲି ଫରେନ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ, ମଥୁରା ବୋଥ୍ ଇଣ୍ଡିଜେନସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଗାନ୍ଧାରା ହେଲା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ, ଓନ୍ଲି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ। ମଥୁରା ହେଲା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ, ଜୈନ ଆଣ୍ଡ ହିନ୍ଦୁ। ଆଣ୍ଡ ଅମରାବତୀ ବି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ, ଜୈନ ଆଣ୍ଡ ହିନ୍ଦୁ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇବ। ଆଉ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଜେନସ୍ ଅରିଜିନ୍। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ରୂପା ଏଠି ମିଳିଛି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରୁ। ଏଠୁ ବେସିକାଲି ନେଇଯାଆନ୍ତି ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆ, ବେସିକାଲି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। The characteristic feature of Amaravati school. Characteristic feature of Amaravati school. The initial period, Lord Buddha is depicted in the form of swastika. स्वस्तिक मार्क जानते ना नहीं, कौनटा कला स्वस्तिक मार्क? এটা উল্টা হয়ে গেল। स्वस्तिक This has been carved out on the cushion seat over a throne that is situated under the Bodhi. As a later stage, the Amaravati school depicted Buddha in the human. The figures of Amaravati have slim teeth and are represented in difficult poses and curves. However, the scenes are overcrowded. ସେଠି ଦେଖ ଗ୍ରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା ଗାନ୍ଧାରାରେ, ମଥୁରାରେ ରେଡ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟୋନ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା, ଏଠି ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାର୍ବଲ। ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାର୍ବଲ। Image of Lord Buddha from Aluru, Dharmachakra from Lingaraj Pali, Bodhisattva are some of the finest instances of the Amaravati school of art and sculpture. तो ये गांधारा स्कूल देखो बुद्धा केमिति ब्यूटीफुल कराई। मथुरा इन्फ्लुएंस बाय ऑल थ्री रिलीजन, एटी केवल बुद्धिस्ट। These are very very important, mainly एटी influenced by three religion, Buddha, Jain and Hindu. And Amaravati mainly Buddhist. Amaravati school ମୁଁ ତୁମକୁ ତିନିଟା ସ୍କୁଲ କହିଦେଇଥିଲି ନା, ଏଟା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ, ମେନଲି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ, କିଛି କିଛି ହିୟର ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ଜୈନିଜ ମିଳେ।
कंपैरिजन जदि करिवो यदि कंपैरिजन करिवो तीनटा रिलीजियस इन्फ्लुएंस जो देखिवो गांधार एटा गांधारा मथुरा एंड अमरावती मु खाली जल्दी ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस पाइबो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस मथुरा प्योरली इंडिजिनस सम काइंड ऑफ but Amaravati are purely indigenous. Religious Buddhism, Hellenistic realism, Buddhism, Buddhist Jainism, eta Buddhism. Material use bluish grey sandstone or grey sandstone. A spotted red sandstone and etala white. Patronage किए करथिले कुसाना गांधारा स्कूल, कुसाना आला मथुरा स्कूल एंड सातवाहन आला है अमरावती स्कूल. ये मैचिंग टा जानी दी था. फीचर कौन ना स्पिरिचुअल बुद्धा, सेड बुद्धा, बियर्ड बुद्धा, लेस ऑर्नामेंटेशन, ग्रेट डिटेलिंग, बुद्धा इन योगी पोस्चर, ग्रीक फैक्टर्स लाइक वेवी हेयर, लार्ज फोरहेडेड, लॉन्ग ईयर ये सब एथिरे देखिया को पाइबो. डिलाइटेड बुद्धा, लेस स्पिरिचुअल बुद्धा, सेवन हेड एंड फेस, मस्कुलरिटी, एनर्जेटिक, graceful posture buddha, seated in padmasana, buddha surrounded by two monks, padmapani holding lotus and vajrapani holding vajra. Halo around the head of buddha decorated with geometrical motifs. The standing buddha of Sravasti, Sarnath and Kausambi is the example. पद्मपाणी जे कि लोटस धरिचंदी, वज्रपाणी वज्र, वज्र माने थंडरबोल्ट. इटा दीज आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट गाइस. जदि एग्जाम रे भी आसे तुमे सेपरेट करि परिबो. सतवान सिंस स्ट्रक्चर आर जनरली पार्ट ऑफ नैरेटिव आर्ट, there is a less emphasis on individual feature of Buddha. Sculpture generally depict life stories of Buddha. This is very important. And the Jataka story, basically, and Jataka story, that is previous lives of Buddha in both human and animal form. Typical feature are lotus, the Puran Kumbha motifs. Structure of Gupta Empire. गुप्ता एम्पायर था हमारे धीरे धीरे मथुरा और अमरावती डेभलप हो सारी से भल से डेभलप हो सारी एंड धीरे धीरे ह्यूमन फिगर, ह्यूमन इमेज बेसिकली हवा को लगिला. किसी बेरुत, अमरावती, सांची, मथुरा केम क्लोजर एवं गोटे टाइप रो हवा को लगिला धीरे धीरे. बेसिकली एलिगेंस आसीबा लगिला. ह्यूमन फॉर्म, मैग्निफिसेंट रेड सैंडस्टोन इमेज, मैग्निफिकेंट रेन सैंडस्टोन इमेज ऑफ बुद्धा ये भी मिलता. ये मिले जो स्टैंडिंग बुद्धा जदि ये स्ट्रक्चर देखिबो, गंगा यमुना ये स्टैंडिंग बुद्धा, वेरी ब्यूटीफुल द स्ट्रक्चर. पाला स्कूल मध्य
लेट गुप्ता स्टाइल एटा कुआ जाए। टेराकोटा इज अ की फीचर ऑफ पाला। बंगला रूफ स्ट्रक्चर ऑफ चालुक्य भी देखियो। बादामी वेस्टर्न चालुक्य एंड ईस्टर्न चालुक्य देखो ये स्ट्रक्चर वेरी ब्यूटीफुल। चालुक्य ऑफ कल्याणी है चालुक्य ऑफ वेंगी। वेस्टर्न चालुक्य स्क्रप्चर ये वाला स्क्रप्चर थिला चालुक्य। these are then तुमरा वेस्टर्न चालुक्य रे गोटे एठी तुमरा कैलाशनाथ टेम्पल ओके ये भी गोटे पाइयो। so these are some basically sculpture development sculpture या जेमती होयसाला द्वारा समुद्र कैपिटल थिला कर्नाटक रे रूल करथिले 10 थ्रू 14 से यही समय वेस्टर्न चालुक्य प्रेसिडेड बाय वेस्टर्न चालुक्य एंड सक्सीडेड बाय विजयनगर एम्पायर ये स्ट्रक्चर थिला सही समय होयसाला ओके। तो मेजर हमें स्टार्टिंग फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन और हरप्पन सिविलाइजेशन टू होयसाला सबुठु रिमार्केबल डेवलपमेंट जदि कहब पोस्ट मौर्यन एज रो होयसाला द्वारा समुद्र पोस्ट मौर्यन रे में तीनटा स्कूल देखिले गांधारा मथुरा एंड अमरावती कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। थैंक यू गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग गॉड ब्लेस यू ऑल। समस्ते रिवाइज कर गोटे गोटे वीडियो को समस्ते लाइक कर शेयर कर सांगसाथी सहित बहुत सारा इनफॉरमेशन पाइबो स्ट्रक्चर गोटे ओवरऑल आइडिया पाइबो डेफिनेटली या रिलेटेड क्वेश्चंस आसीबो तुम यू आर एबल टू सॉल्व दिस। थैंक यू गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग गॉड ब्लेस यू ऑल।